Okay, so yes guys, it's 6 in the morning of the next day, and as I predicted, price went to the upside when the market opened. Exactly, and it is following exactly what we expected. So what I'm gonna capture is the retest that I mentioned earlier. So yes, let me just show you that what is happening on the price and why it is happening. Okay, so as I just said to you, as you can see, the price is following the path that I am just showing you. What I showed you, you can exactly see price मेरा ही path follow कर रहा है. How perfect and near perfect my prediction is, as you can clearly see. So yes, price is proceeding up in a very good momentum. As you can see, there's a lot of bias in the market, and what I expect is that price will break out this level, and I'll open my entries just right here at this point. That is the investing point, and that is the retesting point of these level, because they are, the London session, the Tokyo session, the London session, and the Tokyo session liquidity point. So yes, what I predict is I'm gonna take my entry here. My stop loss will be just below here, and my entry will be all the way to these highs, because price is in an extreme bullish scenario, and as we can see, the market open shows it well. So yes, let's see what happens. सी प्राइस एक्जैक्टली वही बिहेव कर रहा है जो मैंने प्रेडिक्ट करा था. दैट इज़ बिकॉज द इकोनॉमी इज़ फॉलिंग एक्सट्रीमली, एंड ऑल्सो माई स्ट्रेटजी एंड माई एनालिसिस इज ऑन पिन पॉइंट. एंड येस, आई विल ओनली इन्वेस्ट जब प्राइस रीटेस्ट पे पहुंचेगा, तभी इन्वेस्ट करूँगा, बिकॉज आई मोस्टली बिलीव इन इन्वेस्टिंग ऑन रीटेस्ट. So yes, I am extremely happy that it is following our path, as you just saw. एकदम exactly जो मैंने path बनाया था उस path को follow कर रहा है. And yes, without wasting any time, now let's start what we set it our goals. So without wasting any time, let's start generalizing about this thing and start our day. What the fuck is going on right now? This motherfucking internet, man. Damn. I be scrolling. And go. And go. I be scrolling. And go. And go. I was checking on my phone while I'm stretching on my backbone. What's up with this time? Guys, my little writing work is now complete, and so one thing, that was the market analysis. One of the target for morning is complete. Second, writing is complete. Generalizing is complete for the morning. And third thing, that is the most important thing, that is reading 5 pages of the book in the morning. I'll just do when I just came, let me just take a bath. जब मैं नहा धो के आऊँगा तब हम रीड करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे. This is it. So yes, I'll update you guys in a minute. So yes, another Monday, we are now going to college, and of course the price अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा जहाँ तक मुझे expectation है, and I think I'll probably miss out the trade because I'm not here, and price was currently trailing at 3 to 6 level. So yeah, this is pretty much of it, but we'll look for signs. I'll watch the chart from my phone in the college. So yes, this is what it is, and yes, I'm gonna tell you soon. I'm gonna make a good amount of money through funded accounts by getting funded account through trading. And you can see I'm now going to college, and one day I'm gonna, in front of you guys, I'm gonna quit my college and focus solely on trading, and you'll see me making huge amounts of money. And so yeah, this is what my life is all about. This is what my primary aim is. So without wasting any time, let's go to college to waste our time, and I'll see you guys at home. So yes guys, now finally up 6 बज चुके हैं, and 6, and I'm going home now. So without wasting any time, we will look that what the price did according to me.
प्राइस स्काईरॉकेट करा होगा ऊपर की तरफ, बिकॉज मुझे वही लगता है कि प्राइस विल गो टू दी अपसाइड, प्राइस ऊपर ही जाएगा क्योंकि करंट सेंटिमेंट बहुत बुलिश है एंड डेट ही 226 लेवल वॉज एन वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, उस पर काफ़ी लिक्विडिटी थी, तो आई बिलीव इट वुड गो अप। अगर मैं होता तो जब भी दूसरी बार प्राइस टच करता, जैसे कि जब फर्स्ट टाइम जो सुबह हमने देखा था तो फर्स्ट टाइम प्राइस जस्ट रीच करा ही था 3226 लेवल पे, उसके बाद आई एक्सपेक्टेड कि प्राइस ऊपर जाएगा ना, रीटेस्ट करेगा, तो जब भी प्राइस दूसरी बार उस लेवल को टच करता जो कि 3226 लेवल है, देन मैं अपनी बुलिश एंट्री ले लेता उस समय एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि जस्ट अभी कुछ टाइम पहले नहीं है, आई थिंक 1:30 बजे 1:30 पे अपना न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ है, सो आई बिलीव कि बहुत सारी वॉल्यूम ने किक इन करा होगा एंड प्राइस लिटरली कुड हैव इवन मूव टू दी अपसाइड, प्राइस बहुत ऊपर भी जा सकता है क्योंकि आज के न्यूयॉर्क सेशन में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई जस्ट गो होम, आई चेंज माई क्लोथ्स एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मेरा एजम्पशन ये है कि प्राइस ऊपर जा सकता है काफ़ी, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में लंदन सेशन में काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी आएगी आज। सो येस लेट्स सी, अगर वॉल्यूम किक इन करा होता है तो, अगर ऑफकोर्स बिग मूव होगा तो मुझे काफ़ी रिग्रेट होगा क्योंकि ये मूव मैंने प्रेडिक्ट कर रखा था एंड मेरे प्रेडिक्शन के बिना भी खैर अब देखते हैं क्या होता है। So okay guys, now I'm in my room, I've changed my clothes, washed my face, so without wasting any time let's see what the price did today and yes let's see if it lives up to my expectation, जो मैंने predict करा था वैसे ही होता है या नहीं। So let's see without wasting any time। Man, this is why I hate this college shit, as you can clearly see what an absolute entry that I just predicted and price behaved exactly what I said to you. Man, I'm extremely sad that I couldn't take this entry, man. We could have made plus 25% in just this trade. मैंने सुबह आपसे कहा था कि ये ऊपर जाएगा and it went. That's all I want to say. I missed this because of college, जहाँ मुझे जाना पसंद नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, यहाँ मेरी ट्रेड भी मिस होगी, बट I still generalize it so that I learn something from it. So as without wasting any time, let me start my work. अभी 7 PM पे वीडियो आएगी, so please go and watch my video. Please subscribe, please like this video, and so I'll just start my little editing work. A little editing is remaining. उसके बाद then I'll generalize, I'll read, I'll talk to you, I'll upload video, a lot of things to do. So without wasting any time, let's start. Okay, so yes guys, now my video is uploading, which my video is uploading now. Go and watch it. 7 PM it's gonna be out, and yeah, please watch the video and I hope you like it. So yes, now without wasting any time, our editing work is complete, our YouTube video mark is check marked. अब हम क्या करेंगे now, I have read 5 pages in the morning, so मैं बस 5 pages अब सोने से पहले पढ़ूँगा. So without wasting any time, we will start journalizing. We have a lot to do today, and after journalizing, I think that we'll look at markets once again, and I'll update you guys on my position that I just took out. And so yes, this is it, and without wasting any time, let's start journalizing and go. Please watch my video. Shaking on my phone while I'm stretching on my backbone. What's up with this timeline? Really got me into that zone. I'm in it for real when this shit just got real. Everybody getting mad, somebody tell me what's the deal. From political bullshit to Yeezy and his new shit, I really don't give a fuck with shutting me and what you did. For real though, give me something I need to know. Forget all that, looking for something can make me grow. Scrolling, upside down, and go. I've been scrolling.
एंड इफ़ आई टेल यू द रियलिटी, तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी डिस्टर्ब करती हैं। जैसे कि आज जो मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हुई, और यहाँ पे आके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मेरी डेली मिस होती हैं, तो यू नो दैट इवन ब्रेक्स माय थॉट प्रोसेस की मैं ट्रेड ही नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा। डेली मेरी आंखों के सामने वो पोजीशन निकल जाती है जो मैंने प्रेडिक्ट करी हुई थी, तो मुझे बहुत दुख होता है इस चीज़ का। दैट इज़ वाई आई हेट यू नो ऑल दिस शिट। एंड इफ़ आई वॉज देयर आई वुड हैव कैप्चर्ड दिस मूव, एंड अभी जो मैं फ़ील कर रहा हूँ उससे बहुत अच्छा फ़ील कर रहा होता, बिकॉज यू नो what I was waiting for, I would have captured that, but you know what I was waiting for the last 2 days, उसको नहीं कैप्चर कर पाया बिकॉज मैं यहाँ पर था ही नहीं। एंड दिस वॉज अ ब्यूटिफुल मूव। I would have captured, you know what, 25% in what, within 2 hours. That would have been phenomenal, and I would be extremely happy. But here I am just admiring the position because I was not able to take it. And but okay, without wasting any time, let's continue our work, and I'll meet you guys when my journalizing is complete for the day. So yes, now it's 10:06 and I'm still doing my work. And in terms of price action, price ने कोई significant move नहीं करा. It is, you know, just consolidating and making a cluster at the 3313 level. And you know what, the potential entry of जो भी मेरी potential entry रहेगी next, that will be the checking of the recently created fair value gap, because only there I believe there is a amount of liquidity which price wants to recheck, क्योंकि वो एक imbalance है. And after that it may proceed to upside, continuing the rally to the all-time highs as I just predicted. So yeah, this is pretty much of it, and let me show you what the price is currently doing, and then we'll, you know, get back to work. We'll journalize. After that I have to read 2 books today that I am gonna read in front of you. I'm gonna tell you कि क्या चीज़ें हैं जो समझानी है आपको. So yeah, this is pretty much of it. So without wasting any time, let me just show you. So as you can clearly see, जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था, प्राइस एकदम वैसे प्रेडिक्ट कर रहा है. This was the entry that I just missed today, which was absolutely phenomenal, जिसकी वजह से मेरा दिन आज का बेकार ही हो गया एक तरीके से, क्योंकि मैंने मिस कर दी. बट स्टिल, you know, as you can clearly see, my next point is just between this FVG, because ये एक बड़ा imbalance है. As you can see, this is a large imbalance which I expect the price to cure off, और प्राइस उस तरफ बढ़ भी रहा है. So I believe यहाँ पर हमारे पास एक potential entry हो सकती है, क्योंकि there was the levels like this and like this which contains huge amount of liquidity, through which price has gone up in a good momentum, and that lies just between this FVG. Also ये जो है FVG है, ये हमारा न्यूयॉर्क सेशन में फॉर्म हुआ है, जिसकी वजह से इस पर गुड अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी है. सो येस, व्हाट आई एक्सपेक्ट इज प्राइड विल चेक दिस इम्बैलेंस, एंड जब प्राइस यहाँ पे चेक करेगा तो हम यहाँ पे एक पोजीशन लेंगे, एंड विल लुक if अगर सब कुछ सही होता है तो we'll capture a big move to the upside, otherwise we'll make a loss. So my next potential entry is between this FVG only. So yes, now without wasting any time, let's start doing our work. Once again, I want to tell you guys once again that please start doing journalizing if you are serious about this play, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा टाइम लेता है. सिर्फ स्क्रीन पे आपको कुछ क्लिक्स करने से और दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट बिठाने से कुछ नहीं होता. जब तक आप कुछ भी चीज़ लिख के नहीं देखेंगे, जब तक आप अपनी गलतियाँ या आपने जो भी एक्सपेक्ट करा है आप लिख के नहीं देखेंगे, यू कैन नॉट सक्सीड इन दिस फील्ड, राइट. क्योंकि मोस्ट लोग नहीं करते, क्योंकि यही टफ पार्ट है, ये इसमें टाइम लगता है. यही लोगों का बार बार एक ही चीज़ लिखने का मन नहीं करता, बट यही चीज़ आपके गेम को और लोगों से आगे लेके जाएगी, एंड you will be improving at a pace that you cannot even believe you could. So please I say,
if you want to achieve success early and quickly, please journalize, and please journalize. This register is gonna be over, and I think it is gonna be over in the next week or so, even or in the upcoming 5 or 6 days, and the next register is ready that I want to note it on. एंड यू विल सी, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, एंड ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा जब आगे चल के, जब मेरा फंड अकाउंट क्लियर होगा, देन आई विल शो यू दैट हाउ दीज थिंग्स हैव हेल्प मी. ओके सो गाइज, नाउ इट्स 12 एंड माई जर्नलाइजिंग इज़ जस्ट कंप्लीट फॉर द डे. And now, without wasting any time, market has not moved a lot, now in the recent time, because the New York session is the London session is over and the New York session has no liquidity. As I said, जो मैंने पहले ही कहा था कि लंदन सेशन में वॉल्यूम आएगी, लंदन सेशन में वॉल्यूम आई, जो कि हम सब मिस हो गए क्योंकि हम यहाँ पे नहीं थे. आई एम वेरी 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 सैड एंड डिसअपॉइंटेड ऑन दैट. I feel extremely disappointed, to be honest. So now, without wasting any time, I have completed my journalizing, so we'll just read and I'll talk to you a little bit and then we're gonna sleep क्योंकि कल हमें फिर से कॉलेज जाना है. So yes, I'll update you guys. The reason why I journalize mainly is because I have a fear in the back of my mind. मेरे दिमाग में एक डर बैठा रहता है कि जो भी मैं इतनी शार्प एंट्रीज ले रहा हूँ, मैं एक दिन ये भूल ना जाऊँ कि कैसे लेते हैं. आई नो दैट इट साउंड्स अ लिटिल बिट a ridiculous thing to say, but yes, this is the truth, because मुझे डर लगता है कभी कभी कि मैं ये चीज़ें भूल ना जाऊँ एकदम से कि मैंने इतनी शार्प एंट्रीज ली थी. एंड एक मेरे दिमाग में हर समय एक प्रेशर बना रहता है, एक डर बना रहता है कि मैं भूल ना जाऊँ कि कैसे लेनी है ऐसी एंट्रीज. एंड फिर मैं क्या पता किसी दिन कभी ये रिपीट ना कर पाऊँ, ये मन में डर बना रहता है. दैट्स वाई आई राइट बिकॉज आई हैव अ रिकॉर्ड, सो दैट अगर मेरे साथ कभी कुछ होता भी है तो आई हैव ईच एंड एवरी रिटन रिकॉर्ड, सो दैट आई कैन गेट बैक. और मुझे पता है ऐसा कभी नहीं होने वाला. आई एम ऑलवेज गोना रिमेंबर दैट हाउ आई एम गोना ट्रेड, but still there is a fear in back of my mind which I cannot get through. So that's why I write so much, because I'll journalize each and everything that I do, so that I can remember कि मैंने उस समय क्या करा था जो मैंने इतना अच्छा परफॉर्म करा था. This is the main concept behind journalizing. So yes, now let's read the book, and I'm gonna recommend to you is The Magic of Thinking Big. Please read this book. This is an extremely helpful book for me. I have completed this page is 300 pages. I have read approximately 120 pages till now. So soon we are gonna complete it also. And without wasting any time, let's read the book, and then I'm gonna sleep and end the video. That is it. And let's read.